Hello everyone. So today we are here with the MCQs on the Unit 2 Algebra, Matrices and Determinant for Applied Maths Class 12. Maths वालों के लिए भी important है ये MCQs, right? So because it is for Matrices and Determinant, which is same for both. Now let's go for it. So you can find the link for the test. You can give it as a test also. So as you know, we have given you for Unit 1 also. Now we have for Unit 2. So here we have 25 MCQs in this, and I will post the sheet in the description box. You can download the link and give it as a test, and then you can check your answers also. And if you want to do it as a regular practice, you can do that also. Now let's start with the first question. If A and B are the symmetric matrices, then AB minus BA is what? Now first thing is, what do you mean by symmetric matrices? अगर आपने हमारा फॉर्मूला लिस्ट का वीडियो देखा है तो उसमें ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे. क्लियर? सो नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड B इज इक्वल टू व्हाट? B ट्रांसपोज. तो ये आपको गिवन है. अब हमें बताना है AB माइनस BA क्या है. तो उसके लिए जब भी ऐसी कुछ कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, आप उसका भी ट्रांसपोज निकालिए, क्योंकि दोनों चीज ट्रांसपोज से रिलेटेड है. तो अब हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी चाहिए. तो देखिए हमने वो फॉर्मूला लिस्ट जो दिया है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन क्वेश्चंस के लिए. तो इफ आई ओपन इट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिस्ट, व्हाट विल आई गेट? ए बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. माइनस है तो हम अलग अलग करेंगे. सो वी आर यूजिंग हियर टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज टुगेदर. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और ट्रांसपोज का भी यूज कर रहे हैं. सो नाउ हियर व्हाट डू वी हैव? This is BA and this is AB. Why? Because it's given to us that both are symmetric. So now what is it? This is equal to what? BA minus AB. So what is it? So what will be the answer? Now tell me. So what is it? Who will tell me? So AB minus BA transpose is equal to what? BA minus AB. So what do you have here? You have here, if I take common, AB minus BA. Correct? So now what will be the answer? Yes, it will be a skew symmetric matrix, right? So that will be your final answer. Because in skew symmetric matrix, the transpose of the matrix is equal to its negation. So what do you get the answer as? Skew symmetric matrix. That will be your final answer. Now let's move on to the next. What values of x and y will make the matrix equal? So equal matrix क्या होती हैं? जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. तो x का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. 3x प्लस 7 इज 0. सो x इज माइनस 7/3. करेक्ट. बट ऐसा तो कुछ ऑप्शन हमें दिख ही नहीं रहा है और हमारे पास. लेकिन इससे क्या वैल्यू आ रही है? देखिए 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4. इससे x का वैल्यू सेम आना चाहिए था, बट वो नहीं आ रहा है. सो इट मीन्स द ऑप्शन इज डी, दैट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर. तो थोड़ा ध्यान से करिए, एकदम से वैल्यूज मार्क मत करिएगा, अदरवाइज यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. क्योंकि जो लोग नीचे वाला वैल्यू यूज करेंगे उनका वैल्यू आ जाएगा, बट नॉट पॉसिबल हियर. करेक्ट. वैल्यू शुड कम सेम फ्रॉम ऑल द वैल्यूज. करेक्ट. इससे हमारा देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस 3x इज इक्वल टू 2. सो x इज माइनस 2/3. सो डोंट थिंक माइनस 2/3 और y इज इक्वल टू 7 हमें दोनों से मिल रहा है. इन दोनों को इक्वेट करके भी मिल रहा है, इन दोनों को भी. सो डोंट मार्क द ऑप्शन बी. इट इज डी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बिकॉज x का वैल्यू मैच नहीं हो रहा है. Okay, so be careful. Now the third, if A is a square matrix of order 3 and A adjoint of A is 10i, okay, then determinant value of adjoint of A. Again, this is property based. आपको लगेगा कोई मैट्रिक्स नहीं है, हम क्या करें? So A into adjoint of A कितना दिया है आपको? 10i. I means identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. करेक्ट. नाउ हमें निकालना है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? हमें क्या प्रॉपर्टी आपको दी थी फॉर्मूला लिस्ट में? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए रेज टू n-1. अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या है? 10. करेक्ट. व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए? 10. So determinant value of A is 10. So 10 square, that is 100, is your answer. करेक्ट. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट्स, हमेशा ये ध्यान रखिए. एंड 10 इज देयर, सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज 10 यूजिंग द प्रॉपर्टी. कौन सा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई. दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी यूज की, इसीलिए जो हमने आपको फॉर्मूला लिस्ट दी है उसको अच्छे से करिए. करेक्ट. सो 10 स्क्वायर इज 100. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट.
Now, if A is this, find A into adjoint of A. Now, again here this is very important. First tell me what is the determinant value. अभी आप के साथ पहले adjoint of A निकालें, फिर उसको multiply करें, it will take lot of time. हम इसको within seconds करेंगे. कौन सी property use करेंगे? This one. What is the determinant value? Down minus up. So 6 plus 6. What do you get? 12. So what's your answer? Your answer is C. You don't need to find the adjoint of A. अगर आपको properties नहीं आएंगे आप adjoint निकालेंगे और फिर solve करेंगे. Don't make those mistakes. Do it using properties. इसीलिए properties बहुत important है. Let's move on to the next. So A is given to you. You have to find and you have been given that A square is I. So A square का मतलब you have to multiply alpha, beta, gamma and minus alpha with the same matrix. Alpha, beta, gamma and minus alpha. And the answer is 1001. अब इससे आपको कंडीशन बनानी है. करेक्ट, जीरो के इक्वल टू कंडीशंस है. लेट्स मूव ऑन विद दैट. लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा gamma alpha and here we have beta gamma plus alpha square 1001. Now tell me which condition is true. See the options and tell me carefully. What will you go for? Correct? If I put alpha square plus beta gamma is equal to 1. Correct? तो हमारे पास करेक्ट दोनों से सेम आंसर आता है. नो वरीज. सो व्हाट विल यू गेट? 1 minus alpha square minus beta gamma is 0. Correct? So this is how we go for it. Now we get the next. If the matrix is a skew symmetric matrix, then what will be the values of A, B and C? Now here the important part is students कि आपके पास A, B और C का वैल्यू उन्होंने बोला है. करेक्ट? इसमें थोड़ा सा शायद क्वेश्चन में right. Now is it clear? Now this is minus 2. That's not A. Now here we have A, B, 0. Now A, B, 0. Skew symmetric की condition क्या होती है पहले तो ये बताइए. If you have seen the formula list, A is equal to minus A transpose. Now A is equal to minus A transpose. तो इसका मतलब हमारे पास एक और कंडीशन होती है all diagonal elements are going to be 0. करेक्ट. तो A और B का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है? Being a skew symmetric matrix हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. Okay, so now let's make it. Sorry, this is 0. Okay, now so all diagonal elements will be 0. So now B is 0. Correct? A is the A12 position. Okay, sorry. So now B is 0. तो पहले तो हमारे A और D एलिमिनेट हो गए. अब 2 और A में क्या रिलेशन है? A will be what? -2. Correct? Because A is equal to negative of A transpose. Now what will be C? C will be that related to -1. So again negative of -1. So C will be 1. सबसे पहले जो important condition होती है वो ये क्या होती है कि Aij is equal to minus Aji. Correct? One element is the negative of the other and all the diagonal elements are 0. That's an important condition for skew symmetric matrix. Correct? So now, sorry, it's not -1. This will be compared with 3. So this is 3. Right? So A12 will be compared with A21. A13 will be compared with A31. Right? So A12 और A21 में क्या relation होगा? A12 is minus A21. A13 is minus A31. So now these two conditions we will use and get the value of A, B and C. Our diagonal elements are all 0, therefore B is 0. So this is how we get it. Now we come to the next. The system of equations will not have unique solution if K is equal to so and so. So we have to find the value of K. So if we have to find the value of K, so यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है. इट विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन. सो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन तो हमारे पास एक सिंपल होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो देन व्हाट विल बी द कंडीशन?
सो इन काइंड क्वेश्चंस में आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वैल्यू विल बी इक्वेटिंग टू जीरो. सो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो 6 1 माइनस 3 1 3 माइनस 2 एंड 2 1 माइनस k. इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके इक्वल? जीरो के इक्वल. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Right, this is what we do in this. So now let's find the value of k. We will just expand the determinant and solve it. Right, this is equal to 0. So what do we get? Minus 18k plus 12 plus k minus 4 minus 3 plus 18. Okay, now what do we get? This cuts out. Oh, sorry. What's happening out? Now k के terms एक साथ लिए हमने minus 17k. And then we take 12 and minus 4, that's 8 plus 15 equals to 0. So what's the value of k? 23 by 17, right? So that's a C option. So in no unique solution means the value of the determinant will be equated to 0. Okay, now let's go on to the next. Now if the area of the triangle is 20 square units, find the values of k. Now area of triangle का formula क्या होता है? Half into determinant 5 4 1 2 minus 6 1 k 4 1. और इसका वैल्यू क्या है? 20. But it can be plus minus 20 because ये जो हम वैल्यू देते हैं that's absolute value. ओके, सो दैट इज व्हाट वी गो फॉर. बट यहाँ पे क्योंकि 20 स्क्वायर यूनिट्स आपको गिवन है, आप जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों से, प्लस से भी और माइनस से भी. इसीलिए टू वैल्यूज दिए गए आंसर्स में. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ हियर वी हैव half is important in this because 2 will be multiplied with 20. So we get plus minus 40. Now again we expand the determinant. So what do you get? We get this. Okay, now we equate it once with 40, once with minus 40. Now let's go with this. Let's go for plus 40 first. So we get 10k is equal to 90. So k is 9. Okay, now k is 9. Now the other value, let's check it with minus 40. So what do you get? 10k is equal to 10. So what's your answer? 1. Correct? So your answer is 1. So 9 and 1. So two values are possible. C, 9 and 1. Why plus minus 20? Because we always take the absolute value. So plus minus 20 is important. Okay. Now let's go with the next. If A is this, B is this, then what's the relation basically? They are asking you in A and B. So here in these questions, you can find the inverse also and check because हमें inverse के साथ options दिए गए हैं. So but important point in these type of questions is कि आपको ये clear होना चाहिए कि कौन सा किसका इन्वर्स हो सकता है और क्या किसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रहा है. देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है. बी इनवर्स इज 1/6 ए इनवर्स इज 6b, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. उससे हमें पता लगेगा कि हमारे पास जब प्रोडक्ट आ रहा है तो वो क्या आ रहा है. लेट्स चेक इट आउट. ओके, नाउ लेट्स डू इट. लेट्स फाइंड ए बी. I'll tell you how we go for it. Now 2 this row with this column, 2 plus 4, and this row with this column, 2 minus 2, then this row with this column. So we get minus 4 plus 4. Okay, now let's go with the next. 4 minus 12 plus 8. Then we again with the second column, 4 plus 6 minus 4. Then with the next column, minus 8 minus 12 plus 20. देखिए आपको समझ में आ रहा होगा. दिस 4 plus 2 and all. Minus 4 plus 4. And then we get 2 0 0. 2 ones are 2. Minus 2. And then we get minus 4 and plus 6. 10. So if we take 6 0 0 0 6 0 0 0 6. So this is 6i.
तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ए इनवर्स इज आई, करेक्ट. सो नाउ द पॉइंट हियर इज कि अब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है. सो ए कैन बी इक्वल टू ए बी इज 6i. चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. नाउ इसका मतलब ए बी विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी द इनवर्स बट विथ 6i. तो क्या रिलेशन बना ए और बी के बीच में, हु विल टेल मी. Now let's do the working for this. Now if I post multiply this with B inverse, okay, so AI 6B inverse. So A is 6B inverse. This is how it goes. Correct? So which option will it go? B inverse is 1 upon 6A. कौन सा ऑप्शन आएगा? B ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन आएगा? B option. Correct? B inverse is 1 upon 6A. So this is how do we understand these type of questions. So A B निकालना था हमें and it will come as a identity matrix with some constant, तभी हम इन दोनों में relation बना सकते हैं. Otherwise अगर आप individually निकालेंगे A inverse, B inverse, it will take lot of time. Now let's move on with the next. If A is a square matrix such that A square is A, then this is equal to what? So A square is A. Now here we need the identity of A minus B whole cube. So what's the identity? A cube minus B cube minus 3AB A minus B. Right? So let's use this identity. A cube minus A cube minus 3A I minus A plus A. I cube is I. A cube is A square into A. 3A plus 3A square plus A. ये दोनों सेम हो जाएंगे because A square is A. Now A square is A again, so you get minus A square plus A. Right? Anything else that we can change? Anyone? Yes. Anyone? What can we do? A square is A. I minus A whole cube. What will you get? Plus A is equal to what? Yes. A को हम क्या लिखेंगे अब? A square. Very good. Okay. So this cancels out. So what's your answer? That is A option. Correct. So this is how we go for it. So we get the answer only I. और A square को आप फिर से A लिख सकते हैं and it goes on. Correct. So this is how it goes. Now let's move on to the next. The matrix is, as I said in the starting also when we were doing the terms, scalar matrix, diagonal matrix, square matrix, none of these. तो आपको वो एक matrix दे सकते हैं कि ask you which type of matrix is it. So if you see this matrix, इसका order same है. Number of rows is equal to number of columns. So which type of matrix is it? Square matrix, right? So that is what it is. Now next, let's go. For what value of k does inverse does not exist for the matrix? Again, it will go for the singular or non-singular matrix. ये concept पे तो determinant value should be non-zero for the inverse to exist. और does not exist लिखा है inverse, तो determinant value will be 0. So what will you get? 6 minus 2k is equal to 0. So 2k is 6, so k is 3, which is option B. इसलिए प्रॉपर्टीज को जरूर करिए स्टूडेंट्स. प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ ए इज दिस एंड ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास? -3xy5. करेक्ट. और ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसका मतलब -3xy5. अभी हम क्या करें? इसका मतलब क्या है? एक्स एंड वाई आर इक्वल. अभी हम क्या करें? दैट विल बी द आंसर. यस, x is equal to y. Now next, if A and B are square matrix of order 3 such that determinant value of A is -1 and determinant value of B is 3, then find the value of determinant of 3AB. Now this is again important for you. Now based on the property, I told you one property, determinant of AB is determinant of A, determinant of B. And what about 3? I told you one more property, determinant of KA is equal to K raised to an A. राइट. अब हमें ये दोनों प्रॉपर्टी को यूज करना है. सो यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया है? 3. सो व्हाट विल कम आउट? 3 क्यूब विल कम आउट फ्रॉम हियर. सो 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत फोकस है स्टूडेंट्स. प्लीज डू
do it seriously. Formula list अच्छे से कर लीजिए, and if you do it 100% you will score in boards, 100% in this unit. Okay, now let's move on. So what's the answer? The answer is B. Now let's move on with the next. Now if this is the system given to you, you have to find x plus y. So let's move it. So 2x plus 3 is 7, that is what we are getting. 2y minus 2 is 0. So what's the value of x? X is 4 upon 2, that is 2. Y is 1. So what is x plus y? X plus y is 3. So that's option A. Right? So that is what we have. See, matrices or determinant are not tough, but ये properties आपको याद होनी चाहिए. That is important. Now for matrices, the value of, so this is just the property that we have. AB transpose is B transpose A transpose. Right? Now let's move on to the next. If A is a square matrix of order 3 and determinant of A is minus 3, then find determinant of adjoint of A. So again it is property based. Determinant of adjoint of A क्या होता है? Anyone? Determinant of A raised to n minus 1. So what is it? Minus 3 raised to 2. So that's the answer 9. C option. Right? So this is how it goes on. Now let's move on to the next. Now you must be finding it easier if you have done the properties. Now singular matrix, we have to find k. Now singular matrix का मतलब determinant value is 0. So what do you had? Minus 8 minus 3k is 0. So what will be your k? Minus 8 by 3. So that's option D. Right? So this is what we have here. So singular matrix का definition again I have given you. Now we have the next. Equal matrix है, find A and B. Now it's an easy question. Compare the corresponding constants and get your answers. Right? So 2A will be compared with minus 6. So A is minus 3 and B plus 1 will be compared with 13. So B is 12. So कौन सा option है? Minus 3 and 12. That's option C. Now let's come to the next. If a matrix A is both symmetric and skew symmetric, then A zero matrix, diagonal matrix, scalar matrix, square matrix. Now this is important, very important question. And symmetric और skew symmetric दोनों है कि एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के भी इक्वल है और उसके नेगेटिव. इज इट पॉसिबल? नो. सो इट हैज टू बी अ जीरो मैट्रिक्स. अगर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि जीरो का नेगेशन जीरो ही होता है. सो दैट्स ऑप्शन ए. Correct? Now let's move on to the next. If A is a matrix of order 3 and determinant value of A is 8, find the determinant value of adjoint of A. Again, property based. So we get here determinant value of A raised to 2. Right? So now what do you get here? 8 square, that's 64. Right? So what's the answer? What do you get here? 2 raised to 6. This is 2 raised to 6, not 26 students. It's by default. So it's C option. Correct? Now, what is it? The matrix is. Now tell me which type of matrix is it? See, all diagonal elements are 0. किसमें condition होती है ये? Skew symmetric. Okay. Now let's check for other things also. क्या बनता है? 5 5 11 minus 11 7 minus 7. तो हमारे पास क्या बनता है ये? Oh, it's minus 5. Okay, let's make it. This is minus 5, sorry. Right, just tell me what is it? This skew symmetric. Right. Now let's move on to the next. क्या conditions आपने apply किए पहले वाले में? aij is equal to minus aji and aii is 0. ये दोनों conditions skew symmetric है. Now the next. If A is a singular matrix, then adjoint of A is. Now again it's property based. अगर एक singular matrix है तो क्या उसका adjoint होगा? Singular matrix का मतलब determinant is 0. So adjoint of A का determinant क्या होगा? Joint of A raised to n minus 1. ये property आपको पता है. तो adjoint of A is singular, not defined, non-singular, symmetric. So what will be the answer? अगर ये 0 हो जाएगा तो determinant value of adjoint of A will be 0. So it becomes what? Singular. Right? So that is how we go. So properties सबसे important है. I am again telling you. If A is a square matrix, then A minus A transpose is. अब इसमें ऑप्शंस देखिए. नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक.
जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, व्हाट डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू कि यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज। करेक्ट? ट्रांसपोज चेक करते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस transpose of transpose. So what will you get? A transpose minus A. So which is nothing but minus A transpose. So which is nothing but skew symmetric matrix. अगर कोई matrix उसके negation of the transpose के equal है, then it's going to be skew symmetric. Now the last question for the test. If S is Sij is a scalar matrix such that Sii is K and A is a square matrix of same order, then AS is equal to SA is equal to what? Now here the important point is कि आपके पास SII is equal to K. जब भी SII is equal to K होता है, इसका मतलब all the diagonal elements are same. And when all the diagonal elements are same, then determinant value of that matrix is equal to what? K. That is the constant जो है हमारे पास. Correct? एक सिंपल सा हम आपको लॉजिक देते हैं, क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसका के क्या है? 1, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी क्या है? 1. और अगर इसी जगह 10 होगा तो फिर 10 होगा उसका, इट्स नॉट 1000, इट्स 10 ओनली. सो एस आई आई के है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी के होगा. नाउ ए एस इज इक्वल टू एस ए. करेक्ट? तो इसका मतलब एस जो है हमारे पास, दैट्स अ स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली. करेक्ट? वो स्केलर 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो व्हाट विल बी द आंसर? नाउ यू टेल मी. सो इफ आई राइट इट, आई कैन राइट इट एज दिस. एस को हम क्या लिख सकते हैं? के आई. करेक्ट? सो नाउ व्हाट डू यू गेट? यू कैन टेक constant always out, ai, and ai is what? I. So this is what we have. So if you see, most of the questions here are based on the properties, and this is how you get an exam also. Correct? So that's option A from both the cases, AS and SA. दोनों से हमें आंसर क्या आ रहा है? KA. So this is how we go for it. I hope you all have understood all the 25 MCQs. Share your scores with me, and if you have liked it, please share and subscribe. Okay, thank you everyone.